I will hold the phone in the mobile stand, so keep watching. Yeah. Bye. तो भी जा रहे boy. इसकी वजह से शेडो नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ अभी ठीक। तो भाई लोग, आज है रीडिंग करने का दिन, यानी कि कल है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ वाइवा में होता है। सो वाइवा के लिए हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए हम चालू करते हैं पढ़ाई को। ब्राइटनेस हो गई कम और स्टडी हो गई अब चालू। अरे भाई कहाँ गया है? हाइड्रोलिसिस ऑफ Grignard reagent RMgX H2O डालो भाई साहब, यहाँ से टूटेगा HOH। अल्काइल हाइड्रोजन, हाँ सॉरी, अल्केन प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड form first by vector Grignard by by alkyl halide react with magnesium metal vigorously. Reaction takes place in a pressure of either to give alkyl magnesium halide, which on react with water to give an alkane, normal alkane. પછી कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसे हम कोरे हाउस रिएक्शन भी कहते हैं भैया। कोरे हाउस रिडक्शन में RX प्लस बे प्रक्रिया को पहलू होय लिथियम होय ने बीजू होय ने क्यूप्रिक आयोडाइड होय। एनथी जे बने रिस्ट्रिक्टेड कौन है बे रिपोर्ट चैनल ओके ठीक है। ये दो बे प्रक्रिया थाय ने त्यारे कोरे हाउस रिएक्शन थाय। लिथियम डाइहाइलाइड डाइल्काइल कॉपर coupled with a second alkyl halide to give a desired alkane। જેટલા કાર્બન વાળો મોલેક્યુલ હોય ને એની હારે જે બીજો મોલેક્યુલ એડ કર્યો હોય ને बस कपल થઈ જાય વાત પૂરી। આ થઈ ગઈ ભાઈ આપણી આલ્કેનની બનાવટ પૂરી। હવે रिएक्शन ऑफ alkenes नहीं alkenes, हाँ alkenes की रिएक्शन कि वो किसके साथ रिएक्शन करता है। दो प्रकार की रिएक्शन करता है। अरे भाई हाय भाई दो प्रकार की रिएक्शन ये करता है अल्केन। पहला होता है हेलोजिनेशन और दूसरा भी हेलोजिनेशन ही होता है, लेकिन वो फ्री रेडिकल टाइप का हेलोजिनेशन होता है। ठीक है, तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन लवेबल है और एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें स्टेबिलिटी देखी जाती है कार्बोकेटायन की कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसके साथ अगर हम हेलोजन की रिएक्टिविटी देखें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फ्लोरीन और उसके बाद ब्रोमीन
और लास्ट में आता है आयोडीन। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजन का एक नाम है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में होता क्या है कि आल्केन होता है, उसके साथ हेलोजन की रिएक्शन होती है विद द प्रेजेंस ऑफ हाई हीट एंड प्रेशर ऑल्सो, और डायरेक्टली हमको मिलता है कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हम मीथेन की रिएक्शन करते हैं तो। हेलो 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 भाई। ठीक है ठीक है, अपन यहाँ पे फोकस करते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट ऑफ light, the molecule of alkane react with halogen to form alkyl halide. The reactivity of halogen is different and order of reactivity is fluorine, chlorine, bromine, iodine. फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, ऐसी रिएक्शन किस डायरेक्ट धमाका ही होता है। एग्जाम्पल है मीथेन का। अगर मीथेन की हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे बाबू, तो डायरेक्टली हमको CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिलता है। मैकेनिज्म, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है? दो होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहली उसकी मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि वाइवा में तो मैकेनिज्म शायद से ही पूछे भाई, लेकिन हाँ अगर थियरी की पेपर की एग्जाम होती तो सोचना पड़ता कुछ। सबसे पहला अटैक होता है पॉजिटिव हेलोजन के ऊपर और उसके बाद नेगेटिव हेलोजन भी आता है। स्टेप 1 में क्या होता है, क्लोरीन के दो भाग होते हैं, एक हेलोजन चिपक जाता है, दूसरा हेलोजन, और रिएक्टिविटी जो होती है ना वो कार्बन ट्राइक्लोराइड यानी कि जिसे हम हेलोजन क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है डाइहैलाइड की जो ज़्यादा होती है प्राथमिक हैलाइड से, और फर्दर ऐसा होता है CCl3, उसके बाद CH2Cl2। कंट्रोल ऑफ रिएक्शन, at the start of the reaction only methane molecule available to react with the fluorine, but after first step of fluorination methyl chloride form which is also compacts with methane to react with Cl2। yes, मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टेबल होता है मीथेन से। In study of मीथेन, Cl2 may react with methyl chloride to form methylene chloride, and at the end of a reaction we get a mixture of 4 products। कौन कौन सी? कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन और मोनोक्लोरोमीथेन और मीथेन, ये 4-5 कंपोनेंट का हमें मिक्सचर डायरेक्ट मिलता है। So in the case at the end of a first step unreacted methane is in a higher concentration, so fluorine is a more likely to attach methane than methyl chloride। दूसरा आता है फ्री रेडिकल टाइप ऑफ रिएक्शन। फ्री रेडिकल टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हेलोजन के फ्री रेडिकल बनते हैं। हेलोजन के फ्री रेडिकल बेसिकली पहले तो ये ना कितने स्टेप की रिएक्शन होती है? 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। पहला होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन, और तीसरा जो होता है ना वो चेन ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन यानी कि हर एक कोई मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ही रिएक्शन होती है। तो फ्री रेडिकल टाइप ऑफ रिएक्शन में देखते हैं कि पहले चेन इनिशिएशन होता है। चेन इनिशिएशन में हेलोजन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं। बाय द यूज ऑफ एनर्जेटिक लाइट a chlorine molecule dissociate in 2 highly reactive chlorine free radical। दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपोगेशन, जिसमें जो हेलोजिनेटेड फ्री रेडिकल है ना वो मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और मीथेन को फ्री रेडिकल बनाता है। कैसे? एक हाइड्रोजन को निकाल देता है और उसके बाद मतलब ये होता है, कौन है? हाय 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 भाई हाय। और here the collision of methane with a chlorine radical is a probable and productive।
हाँ, मीथेन क्लोराइड अगर बनता है तो ही वो प्रोडक्टिव है, वरना प्रोडक्टिव नहीं है। रिएक्शन होके भी कुछ फायदा नहीं है। और तीसरा और फाइनल स्टेप है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में बेसिकली होता ये है कि जो फ्री रेडिकल्स बने हुए हैं टोटल, वो कोई भी मॉलिक्यूल किसी के साथ भी रिएक्ट हो जाता है और कुछ भी बना देता है। जैसे कि मीथेन का मीथेन के साथ होता है तो इथेन बनता है, क्लोरीन का मीथेन के साथ होता है तो क्लोरोमीथेन बनता है, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ होता है तो क्लोरीन गैस बनता है, और हाइड्रोजन का अगर मीथेन के साथ हो गया तो वापस से मीथेन ही बनेगा, और हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ हो गया तो HCl बनेगा। बहुत सारे कॉम्पोजिशंस पॉसिबल है, और ये सारे जो केमिकल्स बन रहे हैं मिक्सर, वो उसको कैसे कम किया जा सकता है फ्री रेडिकल रिएक्शन में, वो देखते हैं। तो कंट्रोल ऑफ रिएक्शन, पहला है इनहिबिटर्स। व्हेन द कंपाउंड यूज इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट to control the reaction, it is called inhibitor. In this reaction, a methyl radical have ability to bind with a chloride radical, methyl radical and hydrogen radical, but methyl chloride form only when methyl radical react with a chlorine radical. So here to control the reaction done by adding a small amount of active oxygen, यस, पेरोक्साइड को ऐड करके हम इस प्रॉब्लम की सोल्व कर सकते हैं। सो हियर दिस O2 रिएक्ट्स विथ अ पार्शियल मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल क्लोराइड टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड लाइक मिथॉक्साइड्स वगैरह, ऐसा कुछ है। सो ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल get reduced, therefore it's readily available to react with क्लोराइड रेडिकल। ओके भाई लोग, ये तो था अल्केन का प्रोसीजर। इसके बाद देखते हैं अल्किन्स का प्रोसीजर। से हाय, ये लो भाई, इसके बाद देखते हैं हम अल्किन्स। तो अल्किन्स की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो उसके उसके पास एक तो पाई बॉन्ड होगा ही, अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो वो अल्केन होगा, अल्किन नहीं होगा। और उसके पास ऑलरेडी में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है वो सिस और ट्रांस दोनों मिलते हैं, ई और जेड भी मिलते हैं। नोमेनक्लेचर, उसके नोमेनक्लेचर के लिए बहुत सारे रूल्स है, जो कि IUPAC इंडियन यूनियन, IUPAC इंडियन यूनियन, नहीं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ, वाह वाह, IUPAC का नाम आ गया रे भाई। कौन देख रहा है हमें, जरा हम भी देखें। हाँ, एक ही लोग है भाई। सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे ज्यादा ही लाइव स्ट्रीम और एजुकेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हाँ, आइसोमर्स, दो आइसोमर्स होते हैं, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। when the isomer is a formed due to presence of double bond and the rotation of this double bond is a restricted cis trans, cis માં હું હોય તો કે બે કમ્પોનન્ટ સેમ સાઈડ હોય, ટ્રાન્સ માં હોય તો કે બે કમ્પોનન્ટ ઓપોઝિટ સાઈડ હોય, પછી ઈ માં હું હોય, ઈ मीन्स Z के बे कंपोनेंट, सॉरी, हाईली मोलिक्युलर वेट मोलिक्यूल जे होय ई ऑपोजिट साइड होय। પછી Z માં શું હોય તો કે હાઈલી મોલિક્યુલર જે બે કમ્પાઉન્ડ હોય સેમ સાઈડ હોય। હા, on the same side when a similar groups are bound to a same side of double bond, the alkene is considered as a cis isomer. When similar groups are found to be opposite side of the double bond, it is a called trans isomer. डबल बॉन्ड जिसके पास है उसके दोनों सामने साइड हो गए, E और Z isomer E. When attachment of a different element with a carbon double bond carbon, assign the group on the basis of a higher priority by considering the atomic number from highest to lowest to give name of molecule. If the higher priority group on the same side, it is a called Z isomer.
and if it is the opposite side then it is the E isomer. हाँ, बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई इसमें. हवे तो प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स. अल्किन्स को बनाया कैसे जाता है, तो इसके प्रो टाइप है रिएक्शन के. इससे मैं परेशान हो गया, साला टेबल नीचे ही पड़ जाता है, क्या करूं. रिडक्शन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. डाइहैलाइड का रिडक्शन करेंगे तो मामू बनेगा अल्कीन. हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, अल्काइन इज हाँ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन, इट्स मेड अप ऑफ अल्कीन. एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ये मोस्ट टाइम पे है. एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या होता है भाई, E1 E2 ये दो टाइप की रिएक्शन होती है और इसमें कैटालिस्ट भी यूज होते हैं. वो आएगा तब देखेंगे. अब हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं. तो उसमें पहला है रिडक्शन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. अगर हम विसिनल डाइहैलाइड की मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे बाबू तो मिलेगा अल्किन और हेलोजिनेशन के दो मॉलिक्यूल. हाँ, और इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड भी रहना जरूरी है क्योंकि ये जो है वो रिएक्शन को बढ़ावा देता है एज अ कैटालिस्ट. પછી दूसरा जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस. हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन यानी कि हाइड्रोजन की प्रेजेंट में अल्काइंस की रिएक्शन अगर हम करेंगे और हाँ, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड में से डायरेक्ट डबल बॉन्ड में जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में से डायरेक्ट डबल बॉन्ड में जाना है तो लिंडलार्ड उद्दीपक यूज होगा जिसे हम लेड प्लस बेरियम सल्फोनेट के नाम से भी जानते हैं. ये लिंडलार्ड कैटालिस्ट जो है वो यूज होगा अगर आपको अल्काइन में से अल्किन बनाना है. अगर अल्काइन में से अल्केन बनाना है तो भाई ये रिएक्शन मतलब कैटालिस्ट कुछ काम का नहीं है. डायरेक्ट H2 डालोगे तो डायरेक्ट ही आपको अल्केन ही मिलेगा. और इसमें सिस ट्रांस का भी ध्यान रखना पड़ता है. हाँ सेड हाई भाई हाई. हाँ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई. जितने भी लोग देख रहे हैं, कितने 4 है या 6, हाँ सब्सक्राइब करके जाना भाई लोग. R C ट्रिपल बॉन्ड CR और इसकी निकल और हाइड्रोजन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेंगे तो ट्रांस अल्किन बनेगा. ट्रांस अल्किन डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड दोनों मॉलिक्यूल हो गए. और लिंडलार्ड उद्दीपक यानी कि लिंडलार्ड कैटालिस्ट लेड प्लस बेरियम सल्फोनेट જે ટ્રિપલ બોન્ડ ને કન્વર્ટ કરે ડબલ બોન્ડ માં, સિંગલ બોન્ડ માં નહીં. પછી મેઇન જે રિએક્શન है એ ત્રીજી એલિમિનેશન રિએક્શન. ધ introduction of carbon double bond carbon into a molecule having a single bond and must involve remove of atom or group from an adjacent carbon. It is called elimination reaction. यानी कि जो कार्बन है ना सिंगल बॉन्ड वाले, उसके ऊपर दोनों अलग अलग कंपोनेंट हो गए. एक के पास हाइड्रोजन तो दूसरे के पास अल्कोहल होगा और एक के पास हाइड्रोजन तो दूसरे के पास हेलोजन होगा. और इसको बेस स्ट्रॉन्ग बेस की हाजिर में अगर आप रिएक्शन करोगे बाबू तो अल्किन मिलेगा. तो पहले सबसे पहले देखते हैं E2 रिएक्शन. तो E2 रिएक्शन में हम देखते हैं कि क्या होता है. E2 रिएक्शन बायमोलिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन, टू मोलिकुलर वर्क, सेकंड ऑर्डर फॉलो करे છે. हाँ बरोबर છે. E1 and E2 વચ્ચેનો ડિફરન્સ પણ પૂછી શકે છે કાલ વાયવામાં, એટલે ધ્યાન રાખવું પડશે. કાર્બન કાર્બન HX. તો E2 માં શું થાય છે, E2 મીન્સ કે બેઝ ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે. E2 મીન્સ સિંગલ સ્ટેપમાં રિએક્શન થાય અને સિંગલ સ્ટેપમાં રિએક્શન થાય તો કાર્બોકેટાયન ફેટાયન કાંઈ નહીં બને. ડાયરેક્ટ જ OH માઇનસ એટલે કે બેઝ અટેક કરશે હાઇડ્રોજન ઉપર અને હેલોજનને પણ એક જ સ્ટેપમાં જવા દેશે અને ડબલ બોન્ડ બનાવી નાખશે વિધાઉટ એની ઇન્ટરમીડિયેટ એટલે કે ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેપ આવશે જ નહીં. ડાયરેક્ટ જ રિઝલ્ટ મળશે. સાઇન અને એન્ટી આ બે થઈ શકે. હવે એની થિયરી જોઈએ. This reaction done by the use of alkyl halide
in which elimination of a hydrogen and a halogen from alkyl halide to form a alkene carbon carbon HX alkyl halide की स्ट्रॉन्ग बेस में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो वो आल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और पानी और स्ट्रॉन्ग हेलाइड देखा वो अलग। और उसकी मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेप वो होती है, ट्रांजिशन स्टेप यहाँ पे होता है, लेकिन हाँ ये इंटरमीडिएट स्टेप नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेप होता है। ठीक है, ફોલો સિંગલ સ્ટેપ એલિમિનેશન રેટ ઓફ રિએક્શન બેઝ અને પ્રક્રિયા બંને ઉપર ડિપેન્ડ કરે। ઓર્ડર ઓફ રિએક્ટિવિટી, ઓર્ડર ઓફ રિએક્ટિવિટી માં 3 ડિગ્રી મોસ્ટ સ્ટેબલ, 2 ડિગ્રી કરતા, 2 ડિગ્રી મોસ્ટ સ્ટેબલ, 1 ડિગ્રી કરતા। ડિગ્રી નહીં ડિગ્રી, કેટલા જણા જોવે? એક જણો જોવે। When alkyl halide react with hot concentrated alcoholic KOH, a strong base to form alkene KX and water. 1 and 2 elimination of a HX follow E2 mechanism. જેટલા વધુ બીટા હાઇડ્રોજન એટલું વધુ સ્ટેબલ બનશે, અને બીકોઝ જેટલા બીટા હાઇડ્રોજન તેટલા શક્ય કમ્પોનન્ટ બનશે, એટલા માટે E2 માં પણ 3 ડિગ્રી મોસ્ટ સ્ટેબલ છે। મિકેનિઝમ તો જોઈ કાકા આગળ વધો। Here the base is required to extract a proton from beta carbon and it must leave its electron pair behind। આ રિએક્શન માં સ્ટ્રોંગ બેઝ ની હું લેવા જરૂર પડે ને, એ અહીંયા કીધું છે કે બીટા કાર્બન ઉપરથી પ્રોટોન ને કાઢવા માટે એક સ્ટ્રોંગ બેઝ ની જરૂર પડે, જે OH- ડાયરેક્ટ દઈએ છે। OH- અને પ્રોટોન એક્સટ્રેક્ટ થાય એટલે ડાયરેક્ટ વોટર જ બનશે। This electron pair is available to form a pi bond between the two carbon atoms. Halogen leave from the molecule as a halide ion by taking lone pair of electron with itself. Lone pair of electron લઈને વ્યો જાય। Both the anti-elimination and sign elimination are possible depending upon the position of hydrogen and leaving group। अच्छा ठीक है, रिएक्टिविटी अथवा तो ओरिएंटेशन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये डिग्री। चलो ठीक है, मैक्सिमम ब्रांच डबल बॉन्ड वाला अल्किन साथे जोड़ाયેલ હોય તે વધુ સ્ટેબલ। reactivity, the overall reactivity of E2 elimination depend upon the type of substrate and the reactivity of order 3 degree, 2 degree, 1 degree। The E2 reaction, the branching at alpha carbon give a greater number of beta hydrogen for react attack by bases। For 3 degree carbon, it gives amount a more stabilized product as per Sedgwick rule। Sedgwick rule लगता है रे भाऊ। 2 लाइक्स है, 2 लाइक्स। निरंजन बेन त्रिवेदी, क्रिस्टीरा रेना 2022 said hi। क्रिस्टीना रेना, हेलो हेलो। हेबा हाय, कौन है? मैसेज वो ठीक है। थैंक यू फॉर द कमेंट्स गाइस। Sedgwick orientation, Sedgwick orientation શું કહે છે? In dehydrohalogenation, the preferred product is the alkene that has the greater number of alkyl group attached with a double bond carbon।
डबल बॉन्डेड कार्बन. According to this rule, the elimination in which a formation of a more stable alkene is a preferred. More stable alkene જે બને એ stable છે. The hydrohalogenation of a sec-butyl bromide. Sec-butyl bromide. બેઝ કીરો. હા ભાઈ હાઇડ્રોજન એક એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીરો. અહીંયા થાય. The 2-butane is a more stable than a 1-butane because the greater number of alkyl groups attached to a double bond and carbon. So here it 2-butyl to alkyl group attached. In 1-butane only one alkyl were attached. E1 elimination. હવે E1 elimination ની વારી છે. આ થોડું કાઈ નહીં લાઈવ સ્ટ્રીમ કરું હું. ઠીક છે વાંધો નહીં આવજો. E1 elimination. Said I hello भाई लोग hello. Elimination dehydration of alcohol. और इसमें कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री. और इसमें 2 स्टेप होते हैं क्योंकि ये इवन रिएक्शन है और इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया पे ही निर्भर करता है, उसके कैटालिस्ट पे नहीं. हाँ इतना तो आता है, सब कुछ आता है भाई. कितने भाई लोग देख रहे? 6 6 के 6 भाइयों. चैनल सब्सक्राइब करके जाना भाई, अच्छा अगर आपकी मन हो तो. और कंटिन्यू इवन रिएक्शन. The dehydration of alcohol takes place by heating it with alcohol in the presence of H2SO4. Strong acid यहाँ पे चाहिए. Polyphosphoric acid, both are acidic catalyst, or by passing the alcoholic vapor over the layer of aluminium. H2. The step is the acid-base reaction between the alcohol and the catalyzing acid to form a protonated alcohol. Due to formation of carbocation, the conjugated base of an acid abstracts the proton to form a stable alkene, and this step considered as the fast step. Rate of reaction is equal to KROH 0. First order kinetics. Yes, first order kinetics यानी कि फर्स्ट क्रम की कम रिएक्शन है ये. 3 लाइक हो चुके हैं और 5 जने देखने वाले हैं. तो भाई 5 के 5 लाइक करो ना यार. छोटे लोग को सपोर्ट नहीं करते ना आप लोग. वही लगते हो. वो जाने वाले रुक जा जरा. The order of reactivity, it is depending on rate of formation of carbocation and its stability. So tertiary carbocation more stable than secondary carbocation. Rearrangement of even elimination. हाँ भाई साहब, कार्बोकेटायन का rearrangement भी शक्य है. The rearrangement, it is the process of a stabilization in which the least stable carbocation converts into highly stable species by migration of one or more species from first position to other position. वाह, समझ में आ गया बस. ओरिएंटेशन भाई साहब. कमेंट कोई नहीं कर रहा यार. कमेंट ये स्टॉप हो गया है या फिर कोई कर ही नहीं रहा. जो भी है चलो. ओरिएंटेशन, सेग्रेग ओरिएंटेशन. यस,
when more than one alkene is formed by dehydration of alcohol, the more highly branched alkene molecule were formed as in a measured concentration, and it's considered as preferred product. Difference between E1 and E2 reactions. आप में से किसी को भी कोई भी आता हो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो प्लीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन 1 और एलिमिनेशन रिएक्शन 2 के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? अगर बता सकते हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कमेंट फास्ट। 1 मिनट का समय है, तो कितने बजे देखता, हाँ 4:15 हुए है, 4:16 पे मैं आपसे कमेंट सेक्शन में आपका आंसर देखूंगा कि E1 और E2 रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है उसमें कौन सा मेजर डिफरेंस है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, हो सके तो बताओ अगर बता सकते हो तो। यहाँ पे अगर कोई नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी होगा ना, तो वो भी यहाँ पे लिख सकता है, क्योंकि उसको मेजर पता चला होता है अगर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो। फेस यार अच्छे से दिख नहीं पा रहा है इस लाइट की वजह से, और इसको मैं बंद भी नहीं कर सकता, अगर बंद कर दी ना तो कुछ दिखेगा ही नहीं। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, देख रहे हो चुपके से सिर्फ ये लोग बैठ के देख रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। 4:16 हो गया। E1 E2 क्या डिफरेंस नहीं पता, ठीक है चलो, शायद कोई दूसरी जनता होगी यहाँ पे, पढ़ने वाली जनता नहीं होगी, और स्पेशली फार्मेसी और 11th-12th साइंस के तो स्टूडेंट नहीं होंगे। चलो अपना अपना काम कंटिन्यू करते हैं भाई, लाइव स्ट्रीम मेन उद्देश्य नहीं है, मेन उद्देश्य है इसको पढ़ के कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वाइवा में जवाब देना फेस टू फेस। हाँ, E1 elimination is elimination of alcohol to form alkene, और E2 elimination जो है वो elimination of halogen to form alkene। E1 रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसके कैटालिस्ट पे नहीं करता है। ये हो गए E1 के। E2 के एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, उसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो कैटालिस्ट और प्रक्रिया दोनों के ऊपर निर्भर करता है। और हाँ, रिएक्शन इनकम्प्लीट फर्स्ट स्टेप, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन कैटालिस्ट। यस, कैटालिस्ट जैसा होगा उसके बिहेव पे ऐसा ही ये रिएक्शन शो करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों चीज पे डिपेंड करता है। रेडिएशन, ओ रेडिएशन नहीं भाई, रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्किन। अल्किन से हम क्या क्या बना सकते हैं? तो सबसे पहला है अल्काइल हैलाइड। ओ ઇલેક્ટ્રોફિલિક એડિશન રિએક્શન, ડબલ બોન્ડ કાર્બન વાળો ડબલ બોન્ડ જે હોય એમાં ઇલેક્ટ્રોફિલિક એડિશન રિએક્શન એટલે પોઝિટિવ, જે પોઝિટિવ ચાર્જ આયનાઇઝેશન એ જ અટેક કરી શકશે।
એન્ટી રિએક્શન કેની વચ્ચે થાય? તો કે જે ઇલેક્ટ્રોફિલિક અટેક હોય એ મોલેક્યુલ બહુ મોટા હોય, જેમ કે હેલોજન છે કે બહુ મોટા મોલેક્યુલ્સ હોય, તો એન્ટી ટાઈપનું રિએક્શન થાય આમાં, બાકી કાંઈ નહીં. ઇલેક્ટ્રોફિલિક એડિશન રિએક્શન કોમેન્ટ છે શું છે? વાય આલ્કીન undergoes electrophilic addition reaction perform. All alkenes having one or more double bond means one sigma and one pi bond. So here the addition of reaction result in the conservation of one sigma, conversion of one sigma and one pi bond into two sigma. Reason શું છે? The pi bond result from overlapping of p electron. The pi electron lie above and below the plane of double bond. So this electron cloud easily available for electrophilic for a attack. So pi bond result from electrophilic addition reaction. ઇલેક્ટ્રોફિલિક એડિશન રિએક્શન કેટલા પ્રકારની છે? તો કે ઇલેક્ટ્રોફિલિક, ન્યુક્લિયોફિલિક, ફ્રી રેડિકલ અને ન્યુક્લિયોફિલિક, જે કાર્બન ડબલ બોન્ડ કાર્બન વચ્ચે થાય સિવાય કાર્બન ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન વચ્ચે થાય એ. बाबू इसमें देखते साला अपडेट आया कि नहीं? कुछ सब्सक्राइबर बढ़े बढ़े कुछ? $31 रिएक्शन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. और 90 सब्सक्राइबर खत्म कर दिए भाई. कौन था वो जिसने सब्सक्राइब किया मेरे को? मेरे को उसको वो क्या बोलते हैं करना पड़ेगा. हाँ 10 सब्सक्राइबर बचे हैं भाई. 100 सब्सक्राइबर खत्म कर दो भाई. हाँ 10 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं. हर एक बंदा सब्सक्राइब करेगा तो शायद से हो जाएगा, हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा. The electron of alkene attacks on a positive species of reagent to form a carbocation. The energy is required to form a bond in a carbocation. It is available from the liberated energy from breaking of pi bond. Step 2. Fast step 4. The carbocation attacks on a negative species, form stable addition product.
The overall reactivity of alkene towards electrophilic addition depends upon a substitution available on a subject. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी खींचने वाला भाई, कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, ये बात बतानी है। तो सबसे पहला है NO2 प्लस, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, एमाइड और एमोनिया आयन। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन decrease the reactivity by lowering electron density at carbon double bond carbon and by the decreased stability of carbocation formed in step 1. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला, एमोनिया, अल्कोहल, सल्फर हाइड्रोक्स, सल्फर हाइड्राइड, OCH3 એટલે કે આ શું થાય, ઓ ઇથર, પછી આ જે છે એ એમાઇડ. The electron donating groups at a carbon double bond carbon increase the reactivity by stabilizing carbocation formed in a step 1. Orientation, the orientation it is given by a Markovnikov. When and unsymmetrical reagent is added to carbon double bond carbon of unsymmetrically subtract for electrophilic attack, the positive portion of reagent goes to the side of a double bond or triple bond that contains more number of hydrogen. When unsymmetrical reagent is added to carbon double bond carbon or unsymmetrical substrate for electrophilic attack, the positive portion of reagent goes to the side of that contains more number of hydrogen. बाबू पॉजिटिव कौन होय, हाइड्रोजन होय. તું હાઇડ્રોજન ને કે પોઝિટિવ એલિમેન્ટ ને કે બે સરખું જ થાય, સમજાણું. ન્યુક્લિયોફિલિક એડિશન રિએક્શન, ન્યુક્લિયોફિલિક એડિશન રિએક્શન માઇનસ વાળો અટેક કરે છે ભાઈ, ધ્યાન રાખજો. ફ્રી રેડિકલ ટાઈપ ઓફ રિએક્શન કહેવાય આને. Step 1 reagent YW Y plus W plus. The formation of free radical done by passing UV light or a peroxide. Step 2. The free radical attack to carbon double bond carbon to form a new free radical. Step 3. Anti-Markovnikov reaction. પહેલું છે પેરોક્સાઇડ ઇફેક્ટ અથવા તો ખલાસ ઇફેક્ટ. બીજું જે છે એ હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન. સ્ટેટ શું છે? When the reagent attacks on unsymmetrical alkene on a free radical addition, the hydrogen free radical attack on doubly bonded carbon when least number of hydrogen present the product were formed. It is called anti-Markovnikov product.
The addition of HBr into alkene in the presence of peroxide such as tert butyl भाई अबे साला ये चेंज कैसे हो गए अबे ओके एसबीआई ये जोन क्या है बे मेरे को पता नहीं चल रहा कुछ तो है सेकेंड जोन मैंने पेमेंट किया वो started 10 सेंट टू सानिया तो नाम नहीं बोलने का तीन 53 4 35 क्या हाल मुको भाई is known as peroxide effect. HBr, mechanism HBr. Hydroboration oxidation BH3 double just twice oil अरे बच्चे पहलू स्टेप कंप्लीट कर પછી peroxide નાખવાનું છે the hydrogen attack on the carries cation form ethyl boron which on oxidation by H2O2 to give normal propanol ઓઝોનોલિસિસ થી બાબુ બે કમ્પાઉન્ડ બને આલ્ડીહાઇડ છે પછી બે કીટોન બને પછી બે આલ્ડીહાઇડ બને પછી કાર્બોક્સિલિક એસિડ પણ બની શકે છે
ये अल्किन से रिएक्शन करवी पड़े। मोलोसोनाइड અને ઓઝોનાઇડ જીવ એસિડ એનહાઇડ્રેટ common reaction carbon double bond carbon okay. और 1 मिल जाएंगे 194 11 सब्सक्राइबर है भाई साहब 100 सब्सक्राइबर कराई दो यार मजा आ जाए प्रतिक्रिया इसमें रेड मार्क क्यों आ रहा है अभी कंटेंट कंट्रोल्स लर्न अबाउट कमेंट सेटिंग कमेंट के सेटिंग में क्या होता है चलो अपन यहाँ पे फोकस करते हैं ये बड़े ना बड़े कोई बात नहीं है मोनोगोनाइट
quite unstable, so it is a self-decomposition to give a fragment of ozonide. These fragments were rearranged to give ozonide. मैंने आपको बोर्ड में डिस्क्राइब कर सकता हूँ. તેથી આમ જાય એટલે આ ભાઈ જે છે એ અહીંયા જાય, આ જે છે એ અહીંયા જાય. That means કે ઓઝોનાઇડ બનશે. ઓઝોનાઇડ માં હું હોય તો કે ઓઝોનાઇડ કમ્પ્લીટ પીડો છે. હા 5:05 હમણાં જવું જોઈએ. હો ભાઈ હજી તો 4:05 ત્યાં મોજ કરો, ત્યાં તો પૂરો થઈ જાય. તો ઓઝોનાઇડ ઇઝ નોટ isolated, so the reaction is treating with a mild reducing agent like a zinc or dimethyl sulfate to form an aldehyde in ketones. ડાઇન્સ સ્ટેબિલિટી, કોન્જુગેટેડ ડાઇન્સ વધારે સ્ટેબલ હોય, પછી આઇસોલેટેડ ડાઇન્સ, અને પછી હોય અલાઇન્સ, ક્યુમ્યુલેટિવ ડાઇન્સ. due to conjugations, ડાઇલ્સ આલ્ડો રિએક્શનમાં થાય છે. 4+2 રિએક્શન ટાઈપની મિક્સચર હોય જે સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ બનાવે. સાયક્લોએડિશન રિએક્શન. SN1 અને SN2 ની વાત જો કરીએ બાબુ, તો SN1 માં શું હોય? SN1 ધેટ મીન્સ કે ભાઈ સાહેબ પ્રક્રિયક ઉપર તો ડિપેન્ડ કરે છે, પણ કેટાલિસ ઉપર ડિપેન્ડ નથી કરતું. ધેટ મીન્સ SN1 એટલે કે 2 સ્ટેપમાં થતી રિએક્શન. કાર્બોકેટાઇન બનશે, અને કાર્બોકેટાઇન બનશે એટલે બાબુ એસિડ કેટાલિસ રહેશે, કારણ કે કાર્બોકેટાઇન ક્યારે બને? જ્યારે નેગેટિવ એટ્રેક્ટિવ હોય. એસિડ કેટાલિસ્ટ રહેશે. એસિડ કેટાલિસ્ટ હોવાના કારણે એ ભાઈ પહેલા જે છે ને એ નેગેટિવ આયનને ઉપાડી જાય. પોઝિટિવ બને તો ભાઈ પ્રોટોન પહેલા તો હા પ્રોટોન અટેક કરશે. ધેટ મીન્સ કે કાર્બોકેટાઇન બનશે. અને SN1 ધેટ મીન્સ 3 ડિગ્રી 2 ડિગ્રી 1 ડિગ્રી મોર સ્ટેબલ. એટલે SN1 છે SN1 બે સ્ટેપમાં રિએક્શન થાય. ધેટ મીન્સ કે એનું રેસિમાઇઝેશન નહીં થાય, એને વિન્યાસમાં રહે. ટાઈપ ઓફ આલ્કાઇલ હેલાઇડ સબસ્ટ્રેક્શન, બ્રાન્ચિંગ એટ આલ્ફા કાર્બન, સબસ્ટિટ્યુશન એટ બીટા કાર્બન. બ્રાન્ચિંગ કરે છે 1/SN1 SN2. સ્ટ્રોંગ OH બેઝ એક કલાક ફાઇનલ થઈ ભાઈ. લાઈવ વિડિયો ચાલુ કર્યો અને આલ્કોહોલ્સ, કાર્બન ડબલ બોન્ડ, કાર્બન્સ માંથી આલ્કોહોલ ડબલ બોન્ડ તો પાણી પ્રક્રિયા કરવાની. ઇથાઇલ આલ્કોહોલ, સેનિટાઇઝર, આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ, સ્ક્રબિંગ આલ્કોહોલ પણ છે.
ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી શું છે તો કે ભાઈ જે છે ને ઈંધણ તરીકે વપરાય છે, પછી સોડાકીય પીણામાં પણ આલ્કોહોલ વપરાય છે, મેડિસિનમાં તો ઓલરેડી વપરાય જ છે, એટલે તો ફાર્મસીમાં ગણીએ છીએ ભાઈ સાહેબ. રિએક્શનમાં વપરાય કેટાલિસ્ટ તરીકે. ઇન્સ્ટન્ટ બ્લાઇન્ડનેસ, એન્ટીડોટ્સ ઓફ કાર્બન હાઇડ્રોજન. ડાયસ લેવલ્સ લેક્ચર 17 પ્રિપરેશન વુડ આલ્કોહોલ. વુડ આલ્કોહોલમાંથી કેવી રીતના બને તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડની હાજરીમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડની હાજરીમાં H2 પાસ કરો એટલે વુડ આલ્કોહોલ બને. સિન્થેસિસ ઓફ ઇથેનોલ. તો સિન્થેસિસ ઓફ ઇથેનોલ માટે પહેલી જ પ્રક્રિયા છે ફર્મેન્ટેશન, જેનાથી આપણે બનાવીએ છીએ દારૂ. હા, ઈ જ દારૂ જે ગુજરાતમાં લઠ્ઠો તો નહીં પણ દારૂ જ કહેવાય છે. હા, રિએક્શન ઓફ આલ્કિન્સ ફર્મેન્ટેશન થી બને છે. પછી આલ્કિન જે છે એમાં H2O એડ કરવાથી પણ આલ્કોહોલ બને છે. પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિન્થેસિસમાં બલ્ક સિન્થેસિસ, બલ્ક રિએક્શન ઓફ આલ્કિન, હાઇડ્રોશન ઓફ આલ્કિન. હાઇડ્રોશન ઓફ આલ્કિન. ગ્રિગ્નાર્ડ રિઝર્વ RNVX માંથી આપણે બનાવવું તો ROH. અહીંયાથી R જે છે ને અહીંયા RX છે. RX નહીં, ડબલ બોન્ડ વાળું. હા, આલ્કિન છે, અહીંથી છૂટું પડશે એટલે આ બાય પ્લસ, આ બાય માઇનસ. આ માઇનસ જે છે આ બાય પર અટેક કરશે એટલે આ જે છે ને એ અહીંયા જોઈન્ટ થઈ જાય છે. કાર્બોનાઇલ કાર્બન હોય છે. હા, જો ગ્રિગ્નાર્ડ રિએજન્ટ હોય ને એટલે કાર્બોનાઇલ કાર્બન ફરજિયાત છે, જેમ કે કીટોન, આલ્ડીહાઇડ, કાર્બોક્સિલિક એસિડ એ બધા હોવા જોઈએ. તો એમાંથી શું થાય કે આલ્કોહોલ બનાવો ને તો ગ્રિગ્નાર્ડ રિએજન્ટમાંથી તો એક કાર્બન વધી જાય. 1 ડિગ્રી હોય તો 2 થાય, 2 ડિગ્રી હોય તો 3 ડિગ્રી થાય, 3 ડિગ્રી હોય તો કાંઈ થાય નહીં, અને એકોય ડિગ્રી ન હોય ને તો પ્રાઇમરી બને. અને એ છે ફોર્માલ્ડિહાઇડ, જે એકોય ડિગ્રી નથી હોતું, સિંગલ એક કાર્બન જોઈએ. પાણી આવશે એક અહીંયા બે આવશે બાકી creativity order જે છે એ બેન્ઝીનનો વધારે છે. બીકોઝ બેન્ઝીન ઇઝ ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ તરીકે પણ કામ કરે છે. That's why carbon double bond is highly electrodeficient, then carbon double bond is more stable. હાઇડ્રોલિસિસ ઓફ આલ્કાઇલ હેલાઇડ RX નું હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ ને એટલે ન્યુક્લિયોફિલિક ટાઈપની એડિશન રિએક્શન થાય એટલે આઈથીન પેલા નીકળી જાય, RH લાગી. aldol condensation, reduction of carbonate compound, reduction of aldehyde or ketones.
रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो रिएक्शन થાય એમાં ટ્રીટમેન્ટમાં જોતો કાલે ભાઈ સાહેબ પહેલા જે છે નેગેટિવ અટેક કરે છે reduction of reduction is like sodium in ethanol reaction agent metal hydride lithium aluminum hydride sodium borohydride hydrogen gas in the presence of copper H2 gas in the presence of nickel structures and uses structures and uses માંથી ગમે એ પૂછશે ને એટલે કાલ ધુવાણા નીકળી જવાના ethyl chloride uses as an anesthetics as a propellant for alcohol used for a synthesis of styrene monomer preparation of ethyl cellulose by reaction between cellulose and ethyl chloride in dentistry used as a diagnostic agent for a dead tooth used as a game and to encounter sexual ability chloroform CHCl3 synonym trichloromethane medicinal use શું છે તો કે anesthetic agent છે as a solvent છે as a Demer-Timan test to identify phenol as in Demer-Timan test to identify phenol sedative છે અને as a solvent for the preparation plus pesticides grain fermentant rubber industry પછી starting material tapping છે પછી criminal uses છે used by origin to force out or even murder victim trichloroethylene dry clean solvent for the preparation of fluorocarbon refrigerant solvent for extraction for vegetables oil from plants such as soya coconut palm tetrachloroethane trichloroethylene dry click solvent for the preparation of fluorocarbon refrigerant solvent for extraction for vegetable oil from plants such as soya, coconut, palm. Tetrachloroethane. Powder, uniform, treat of the form, degrease in the metal part used to prepare 1,1,2,2 tetrachloroethane, a most used refrigerant dichloromethane, CaCl. Synonym methyl chloride, dichloromethane. Uses it is a volatile and ability to dissolve wide range of non-polar organic compounds. So used as a solvent for many chemical process, propellant for aerosol, to weld certain type of plastics. Iodoform CHI3 synonym triiodomethane. In a small scale, used as a disinfectant, as an antiseptic for to heal, and a dressing for wounds. Active ingredient in many ear powder for drug.
ethyl chloride, chlorine, ethyl alcohol. Antiseptic, most commonly antibacterial, available in the form of a hand sanitizer gel. Unit dot, treat the poison of methanol. Medicinal solvent, elixir, syrup, of preparation. In engine fuel, in perfume and deodorant. Psychoactive substance. પછીનું છે મિથેનોલ, લઠ્ઠો જેને કહેવાય, એઝ અ સોલ્વેન્ટ છે, પ્રિપરેશન ઓફ ફોર્માલ્ડિહાઇડ, એસિટિક એસિડ અને મિથાઇલેટેડ ડેરિવેટિવ ઓફ ઇથર, એઝ અ જેટ ફ્યુલ, ક્લોરોબ્યુટેનોલ, C, Cl, 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 C, CH3, CH3OH, CH3C, CCH3OH. Antibacterial અથવા તો antifungal છે, 0.05% mix with H2O as a preservative, weak and local anesthetic છે, sedative and hypnotic છે, cytosterile alcohol. Use viscosity increasing, it is called fatty alcohol, used as an emulsion, stabilizer, surfactant in a hair product for hair conditioning. Benzyl alcohol, OH, skin ધીરી રાખે, uses, used as a humectant, 5% in a treatment of a red lice, as a preservative in allowed concentration in IV medication and cosmetic preparation, insecticidal in a high concentration, for benzylation in a chemical reaction, glycerol, glycerin. Yes. Food industry, solvent, sweetener and preservative. Pharmaceutical as an emollient to provide smoothness, lubrication to relieve itching in the abstraction. E-cigarette to create smoky smooth environment. To prepare active medication such as nitroglycerin. પછી 13 છે propylene glycol, propylene glycol. Uses, alcohol based hand sanitizer, humectant છે, used in a various edible items such as coffee related drinks, liquid sweetener and sometimes in ice cream to preserve ant DNA. ચલો હવે આગળનું જે છે ને એ આપણે આફ્ટર ધ બ્રેક ચાલુ કરશું. 5 થી 7 લેક્ચરનું જે છે રિવિઝનમાં બાકી રહ્યું છે, બાકી તો થઈ ગયું છે, તો આને અહીંયા નહીં આપણે બંધ કરી શકશું. तो थैंक यू भाई लोग हमसे जुड़ने के लिए. फोन टॉप फैंस अगर देखे, क्रिस्टीना, रिया, निरंजना बेन है, निरंजना बेन हेड़ा, इन सब आईडी को चेकआउट करने के लिए कोई ऑप्शन है क्या अपने पास? नहीं है रे. वॉच फॉर 10 मिनट अप टू 3 लाइव चैट्स पर आवर. सुपर चैट्स, गिफ्ट निरंजना बेन त्रिवेदी से हाय.
say hi. Add as a moderator. Put user in a timeout. Hide user on this channel. ના 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 ચેનલને હાઈડ નથી કરવા મારે. ક્રિસ્ટીના ડ્રેના 2022. હાય હેલો હેબા તન્ય પારસ આવજો બધા લોકો.